Welcome back students of class 10th. We are solving coordinate geometry. हमारी एक्सरसाइज पहली का क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे. इट इज -5, 7, it is -1, 3. These are 2 points. So we denote these 2 points. Let this be point A, let this be point B. So let us denote A point -5, 7. तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स -1, 3 एंड B इक्वल टू वी हैव -1, 3. ठीक. So we write here the distance formula. So our distance between points A, B will be equal to square root. It is x2 minus x1 whole square plus it is y2 minus y1 whole square. ठीक. So x1 and x2 क्या है? Here x1 is -5 and y1 is 7. x2 is -1 and y2 is 3. We take this x1, y1 and this x2 and y2. हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यूज को. We write square root. और x2 is -1. x2 के बदले हमारा वैल्यू है -1 and this minus and then x1 it is again -5. We write it in bracket. इसको करते हैं लॉन्ग ब्रैकेट. ठीक. इसको कन्वर्ट करते हैं इंटू लॉन्ग ब्रैकेट प्लस एंड वी हैव y2 दैट इज 3 माइनस एंड वी हैव y1 दैट इज 7. ठीक. एंड वी राइट इट स्क्वायर. तो देखते हैं यह क्या बनता है. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस बिकम्स +5 होल स्क्वायर प्लस एंड वी हैव 3 minus 7 it is -4 whole square. It turns out to be square root of 5 minus 1 is 4 square plus -4 square. अब देखिए 4 square is 16, 4 square is 16 and -4 square is also +16. Square of negative integer is positive. So ये बनता है square root of 32. इनको लोवेस्ट टर्म्स में भी लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 2. सो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2. आप ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2. तो ये आपका मिलेगा स्क्वायर रूट इट इज़ इधर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. इसको करेक्ट करते हैं. इट इज़ इसको करेक्ट करते हैं. इट इज स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 16 इज 4 रूट 2. सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इट इज 4 रूट 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग.